आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय संविधान के एक ऐसी हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर सिविल सेवा या नेट एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। आर्टिकल 371 की ये पूरी श्रृंखला एक तरह से ये आपके लिए एक परफेक्ट मास्टर रिवीजन गाइड होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में हर राज्य पर बिल्कुल एक ही संवैधानिक नियम लागू हो सकता है? खैर, असलियत ये है कि हमारा संविधान इतना लचीला है कि वो 12 अलग-अलग राज्यों की खास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जरूरतों को प्रोटेक्ट करता है। और ये होता कैसे है, इसे समझने के लिए हमें संविधान के भाग 21 यानी पार्ट 21 को देखना होगा। इसमें कुछ खास अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। आसान भाषा में कहें तो यही वो हिस्सा है जो भारत में असम्मित संघवाद या असिमेट्रिक फेडरलिज्म का बेस तैयार करता है। इस पूरे टॉपिक को हम सिर्फ रटने के बजाय लॉजिकल ब्लॉक्स में समझेंगे। हम इसे 6 हिस्सों में कवर करेंगे: मास्टर मैट्रिक्स, विकास बोर्ड, नागालैंड का प्रशासन, समितियां और संस्कृति, प्रशासनिक समानता और जनसांख्यिकीय सुरक्षा। चलिए, सबसे पहले आते हैं हमारे सेक्शन 1 पर, जो है मास्टर मैट्रिक्स। ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। आर्टिकल 371 से लेकर 371J तक कौन सा राज्य किस कैटेगरी में आता है, इसका ये एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। एग्जाम्स में मैच द कॉलम वाले जो सवाल आते हैं ना, उनके लिए ये एकदम सॉलिड रिवीजन टूल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जिसका फोकस है विकास बोर्ड। देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के मामले में संविधान का पूरा फोकस इकोनॉमिक इक्विटी यानी आर्थिक समानता पर है। राष्ट्रपति राज्यपालों को ये स्पेशल पावर देते हैं कि वो विदर्भ, मराठवाड़ा या सौराष्ट्र जैसे पिछड़े इलाकों के लिए अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाएं। इससे ये श्योर होता है कि फंड्स का सही बंटवारा हो और वहां के लोगों को टेक्निकल एजुकेशन और नौकरियों में बराबर का हिस्सा मिले। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो काफी महत्वपूर्ण है, नागालैंड का प्रशासन। आर्टिकल 371A बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब संसद का कोई भी कानून नागालैंड में तब तक लागू ही नहीं हो सकता जब तक वहां की स्टेट असेंबली उसे पास न करे, खास तौर पर उनके धर्म, उनके प्रथागत कानून और जमीन से जुड़े मामलों में। ये नागा लोगों के कल्चर और अधिकारों को बचाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल संवैधानिक ढाल है। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पावर का बैलेंस देखिए। वहां के राज्यपाल के पास स्पेशल पावर्स हैं और वो अपने विवेक से फैसले ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल राष्ट्रपति के ही पास होता है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो राज्यपाल की इस स्पेशल पावर को किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं। इसी में एक बहुत स्पेसिफिक फैक्ट है जो अक्सर MCQ में पूछा जाता है: 35 सदस्यों वाली रीजनल काउंसिल। ये काउंसिल खास तौर पर नागालैंड के त्वेंसांग जिले के लिए बनाई गई थी। जरा सोचिए, शुरुआत के 10 साल के एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए इस जिले को सीधे राज्यपाल के एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया। यहाँ तक कि इसके विधायक भी सीधे पब्लिक नहीं, बल्कि यही रीजनल काउंसिल चुनती थी। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, समितियां और संस्कृति। अगर हम असम और मणिपुर की बात करें तो दोनों में एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। असम के आर्टिकल 371B में ट्राइबल एरियाज की कमेटी बनाने का काम राज्यपाल करते हैं, जबकि मणिपुर के 371C में हिली एरियाज यानी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कमेटी बनाने का पावर सीधे राष्ट्रपति के पास है और केंद्र वहां सीधे डायरेक्शन भी दे सकता है। ठीक नागालैंड की ही तरह मिजोरम के लिए आर्टिकल 371G बिल्कुल एक शील्ड की तरह काम करता है। मिजो लोगों के प्रथागत कानून और उनकी जमीन के अधिकारों को ये बाहरी दखलंदाजी से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। सेक्शन 5, प्रशासनिक समानता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विटी। अब थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 371D और E, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैं। यहाँ मेन मुद्दा है डेमोग्राफिक फेयरनेस, मतलब लोकल लोगों को वहाँ की सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए गारंटीड प्रेफरेंस दिया जाता है, ताकि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रीजनल बैलेंस बना रहे। और इसके लिए एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप उठाया गया। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो सिविल सर्विस के विवादों को सुलझाने के लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये ट्रिब्यूनल सीधे हाई कोर्ट को बाईपास कर देता है और केवल सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह होता है। हमारे संविधान में ऐसा एक्सेप्शन बहुत रेयर है।
हमारा आखिरी सेक्शन है जनसांख्यिकीय सुरक्षा। अब बात करते हैं 1975 के 36वें संविधान संशोधन की, जब सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आर्टिकल 371F के जरिए संसद को ये पावर दी गई कि वो सिक्किम की अलग अलग कम्युनिटीज के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करे और साथ ही वहां शांति और डेवलपमेंट की खास जिम्मेदारी राज्यपाल को सौंपी गई। एक और दिलचस्प बात देखिए, मिजोरम, गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए संविधान अपने ही जनरल रूल्स को ओवरराइड करता है और उनके लिए एक मिनिमम विधानसभा सीटों का नंबर फिक्स कर देता है। इन सभी आर्टिकल्स में आप एक पैटर्न देखेंगे। राज्यपाल की स्पेशल पावर्स राज्य की ज़रूरत के हिसाब से ढल जाती हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर स्टेट होने के नाते फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर है, वहीं सिक्किम में मेन फोकस शांति बनाए रखने और सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी पर है। तो अंत में एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग नियम बनाने से देश का फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होता है? बिल्कुल नहीं। दरअसल यही असिमेट्रिक संघवाद या एसिमेट्रिक फेडरलिज्म भारत की असली ताकत है। ये हमारी भारी विविधता और लोकल कल्चर्स की रिस्पेक्ट करते हुए पूरे देश को एक धागे में पिरोए रखता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और Welcome to this Constitutional Analysis Explainer. Look, if you're gearing up for UPSC, state PSCs, or UGC NET, you are in exactly the right place. Today, we're acting as constitutional detectives to unpack one of the most fascinating and honestly frequently misunderstood parts of the Indian Constitution. Grab your notebooks, because we are going to lock these concepts into your memory right now. Let's get started. Okay, let's dive right in with a massive question. Do all Indian states actually have the exact same rights? It's a huge myth that Indian federalism treats every single state identically, like perfectly equal puzzle pieces. No way. The reality is far more complex and honestly far more brilliant. We're going to shatter that myth of absolute symmetry today and see exactly how the Constitution accommodates regional diversity. Here's our roadmap. First, an introduction to Article 371. Second, provisions for Maharashtra and Gujarat. Third, cultural autonomy in Northeast India. Fourth, special administrative powers in Sikkim. Fifth, Andhra Pradesh and other regions. And finally, a look at asymmetric federalism. Section 1. Article 371. An introduction. So, what exactly are these special provisions? You'll find them tucked away in Part 21 of the Constitution, and they cover 12 specific states. Now, why do they even exist? Well, they absolutely aren't about breaking our national unity or playing favorites. And just to be clear, unlike the former Article 370, these are carefully designed, temporary, transitional, and special measures. They're literally built to protect local economic interests, preserve unique cultural and tribal identities, and ensure equitable development in regions that have historically faced some really unique challenges. All right, feast your eyes on this master map. If you're a competitive exam aspirant, take a second right now to mentally lock in these alphanumeric pairs. We're going from the baseline Article 371, covering Maharashtra and Gujarat, all the way down the alphabet to 371J for Karnataka. You know examiners absolutely love to test your memory on matching these specific articles to their states, right? So visualizing this list is going to give you a massive advantage. Moving on to Section 2. Provisions for Maharashtra and Gujarat. Under the primary Article 371, the President actually has the power to authorize the governors of Maharashtra and Gujarat to set up what are called separate development boards. Pay close attention to that exact term. In Maharashtra, this targets regions like Vidarbha and Marathwada, and over in Gujarat, it's Saurashtra and Kutch. The whole goal here, strict economic equity. These boards make sure that developmental funds are shared fairly, and that local youth get adequate facilities for technical education, vocational training, and even state government jobs. Basically, it ensures these specific regions don't lag behind the rest of their state. Section 3. Northeast India. Cultural autonomy. Now, this is where it gets really interesting. The immense constitutional power of customary law. For Nagaland under Article 371A and Mizoram under 371G, this protection is absolute. I mean, the Indian Parliament literally cannot pass any law that messes with their religious or social practices, their customary laws, civil and criminal justice administration, or even land ownership. A central law on these issues only applies if the state's legislative assembly actively passes a resolution to adopt it. Talk about a powerful safeguard for indigenous identities.
Let's zoom in on Nagaland's unique setup under 371A. Picture the flow of power for a second. Because of historical internal disturbances, the president actually gives the governor a special discretionary responsibility for law and order. The governor's call is final. Plus, there's a highly specialized 35-member regional council just for the Tuensang district. For at least 10 years after Nagaland was formed, the governor directly administers this district. This ensures central funds go exactly where they're supposed to. And get this, no state law applies to Tuensang without this council saying so. Okay, exam-focused learners, here's a quick, precise data point for you. The number 40. Under Article 371G, the Constitution specifically says the Mizoram Legislative Assembly must have a minimum of 40 members. This is a brilliant exception to highlight because normal state assembly rules require a higher minimum. But, these special provisions are flexible enough to accommodate the unique demographic realities on the ground. Section 4. Special Administrative Powers and Sikkim. So while Nagaland and Mizoram have that massive autonomy over customs, Assam and Manipur use a completely different mechanism. Under 372B for Assam and 371C for Manipur, the president can actually mandate the creation of specialized legislative committees. These aren't just any committees. They're made up of MLAs elected specifically from the tribal areas in Assam and the hill areas in Manipur. It guarantees that marginalized regions get a distinct, powerful voice right inside the state legislature. Oh, and note a vital exam fact here. For Manipur, the governor has a special duty to report annually to the president about how these hill areas are being administered. Now, Sikkim is a truly unique case under Article 371F, which was added by the 36th Constitutional Amendment way back in 1975. When Sikkim shifted from being a protectorate to a full state of the Indian Union, it really needed a unique constitutional cushion. This article guarantees Sikkim one seat in the Lok Sabha, protects its incredibly diverse population by allowing specific assembly seat allocations, and, crucially, gives the governor special discretionary responsibility for peace and equitable economic development for everyone. Time for another awesome memory trick. The magic number this time is 30. If you draw a direct mental line between Sikkim under 371F, Arunachal Pradesh under 371H, and Goa under 371I, you're going to see they all share this exact same rule. Their legislative assemblies have to have a minimum of 30 seats. Just grouping these three together in your notes is a surefire way to grab some easy marks in those multiple choice sections. Pay super close attention here, because this is a classic trap set by examiners. Both Arunachal Pradesh and Sikkim give their governors special discretionary powers, but for totally different reasons. Under 371H for Arunachal Pradesh, the governor's special responsibility is strictly for law and order. But jump over to Sikkim under 371F, and the governor's special responsibility is for peace and equitable economic development. Definitely do not mix those two up on test day. Section 5. Andhra Pradesh and other regions. Looking down south at Articles 371D and E for Andhra Pradesh and Telangana, the focus shifts heavily toward equitable public employment and education. The president gets sweeping powers here to ensure equal opportunities, like organizing local civil service cadres and directing university admissions. But here is the massive takeaway for you law and political science students. Article 371D actually allows the creation of a special administrative tribunal to handle civil service disputes. And get this tribunal completely bypasses the state high court. It's answerable only to the Supreme Court of India. Meanwhile, 371E is pretty straightforward. It just empowers Parliament to establish a central university in Andhra Pradesh. Our final alphanumeric stop is Article 371J for Karnataka. This one focuses specifically on the Kalyana Karnataka region, which you might know by its older name, Hyderabad, Karnataka. This provision echoes the exact same logic we saw at our very first stop in Maharashtra and Gujarat. It grants special status to 6 backward districts in the region, mandating a separate development board to fix historical imbalances, and ensuring locals get reservations in educational institutions and state government jobs. Section 6. Conclusion. Asymmetric federalism. So what's the big picture takeaway from this whole explainer? It all boils down to the concept of asymmetric federalism. Giving special treatment to these 12 states is absolutely not a weakness or a flaw in the Indian Constitution. It's actually a deliberate, highly flexible feature. I mean, India is incredibly diverse, right? To keep such a massive, diverse nation united, the framers realized early on that a rigid, one-size-fits-all approach just wouldn't work. Asymmetric federalism accommodates that diversity, protects vulnerable cultures, and actively fixes regional economic imbalances.
In the end, it weaves a much stronger national fabric. I want to leave you with this provocative thought exercise. This is literally perfect for a UPSC mains answer. How does Article 371 strengthen national integration despite creating inequalities in state powers? Think about that for a second. Think about how giving a region the autonomy to protect its own identity actually prevents alienation and fosters a much deeper loyalty to the Union. Thank you so much for joining me on this constitutional deep dive today. Review